बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 1 अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस। उसके मैंने बहुत आसान नोट्स बनाए हैं, आप देख सकते हैं। और फर्स्ट जो हमारा चैप्टर है वो है यूनिट 1 इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। ठीक है, तो अभी हमारा स्मार्ट सिलेबस शुरू हो गया है। इन 4-5 महीनों में हमें अपना कोर्स कंप्लीट करना है। और आपको पता है कि पेशावर बोर्ड के मुताबिक जो है हेडिंग्स और एक्सप्लेनेशन ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन अभी हमें 4-5 महीनों में अपना सारा कोर्स कंप्लीट करना है, क्योंकि आपके साथ थोड़ा मटेरियल हो ताकि आप लिख सको पेपर में। तो हम शुरू करते हैं जी। आप देख सकते हैं, इसे फिर आप कॉपी भी कर सकते हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। बायोलॉजी is the science of life. In Greek words, bio means life and logos means to study. In 1736, a Swedish scientist called Linnaeus for the first time used the word biology. Biology has three major divisions: botany, zoology, microbiology. Botany, it is the study of plants. Zoology, it is the study of animals. Microbiology, it is the study of microorganisms. Example are viruses, bacteria, and microscopic fungi. Branches of biology. Biology is a fast growing field of science. Therefore, it is divided into many specialized branches for better understanding and convenience. नंबर 1 जो है हमारे पास ब्रांचेज में मॉर्फोलॉजी, इट इज़ द स्टडी ऑफ फॉर्म, शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म. नंबर 2 एनाटॉमी, इट इज़ द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिजम्स. नंबर 3 है हिस्टोलॉजी, इट इज़ द स्टडी ऑफ द कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड function of plants and animal tissues. Number 4 जो है physiology, it deals with the function of different part of organisms and activities occurring in them. Number 5 जो है embryology, it deals with the embryo and the phenomena involved in the formation of embryo and its development into new organisms. Number 6 जो है taxonomy, it is the study of classification of organisms and their scientific naming. Number 7 जो है cell biology, उसे हम cytology भी कहते हैं, is the study of cells and their organelles. Number 8 जो है paleontology है, it is the study of fossils of past organisms. The study of fossils of plants is called paleobotany, and the study of fossils of animals is called paleozoology. Number 9 है immunology, it deals with the body system of defense against disease causing microorganisms. Number 10 जो है entomology, it deals with the study of insects. Number 11 जो है हमारे पास genetics, it deals with the study of transmission of our characters from parents to offsprings. Number 12 जो है biotechnology, it is the study of the use of organisms for the benefits and welfare of humanity. Number 13 जो है environmental biology, it is the branch of biology which deals with the interrelationship of organisms and their environment. Number जो है हमारे पास 14 parasitology, it is the branch of biology which deals with the study of parasites and all aspects अच्छा of parasitism. अच्छा, फिर है 15 में social biology is concerned with the social behavior of some animals such as humans, bees and etc. Number 16 जो है pharmacology, it is this scientific study of drugs and their effect on human body. Pharmacology analyze the synthesis and breakdown biological activity and effects and delivery of drugs. ये नहायत आसान नोट्स हैं जो प्योर नोट्स है आपके लिए। आप इसे बोर्ड के एग्ज़ाम में भी लिख सकते हो। स्टूडेंट्स में गलती होती है कि वो एक चीज़ की बहुत ज़्यादा टीचर कुछ और लिखवाता है, गाइड में कुछ और याद करते हैं सब चीज़ों को, तो फिर वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि अभी हमें क्या लिखना है। तो ये मैंने बहुत प्योर नोट्स बनाए हैं आपके लिए, ये आपकी मदद करेंगे। इसी याद करें, आपके साथ बुक और नीट कॉपी ज़रूर होनी चाहिए। अच्छा, 5 किंगडम सिस्टम्स पढ़ेंगे हम। Robert Whittaker in 1968 classified all living organisms into 5 kingdoms. This is known as a 5 kingdom system of classification. These 5 kingdoms are number 1 kingdom Monerae, prokaryote. Number 2 है kingdom protoctista, इसे हम प्रोटिस्टा भी बोलते हैं। ठीक है, नंबर 3 फंजाई, नंबर 4 प्लांटाई एंड नंबर 5
एनिमिलिया। नंबर 1 जो है किंगडम प्रोकार्योटा एंड मोनीरा जो है ए, पॉइंट्स में लिखेंगे हम। इंक्लूड आर यूनिसेलुलर एंड सिमिलर ऑर्गेनिजम्स। नंबर बी सच ऑर्गेनिज्म लाइक मेम्ब्रेन बॉडी बाउंडेड बॉडीज such that a nucleus and other organelles therefore also called as prokaryotes. Number C जो है these organisms having cell wall which is made up of urine, amino acids, glucose, protein, carbohydrates. Number D example are bacteria. किंगडम प्रोटिस्टा एंड टोक्टिस्टा जो है उसमें नंबर 2 शुरू हो गया है। किंगडम 5 किंगडम है ना, तो इसमें ए दिस इज अ स्मॉल यूकारियोटिक ऑर्गेनिजम्स। नंबर बी यूजुअली लिव इन एक्वेटिक हैबिटेट। नंबर सी हैविंग कैरेक्टर्स ऑफ बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। नंबर डी सेल वॉल इज प्रेजेंट इन सम वाइल सम लेकिंग इट। अच्छा जी। नंबर ई जो है एग्जाम्पल्स आर प्लाज्मोडियम यूग्लिना। नंबर 3 किंगडम फंजाई ऑल ऑर्गेनिजम्स आर यूकारियोटिक एंड मल्टीसेलुलर इन दिस किंगडम। नंबर बी क्लोरोप्लास्ट इज एब्सेंट सो कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड सो कॉल्ड हेटरोट्रोफिक। नंबर सी सेल वॉल इज प्रेजेंट और मेड अप ऑफ केटाइन पॉलीसेकेराइड्स। नंबर डी फूड स्टोर इन ग्लाइकोजन फॉर्म। नंबर ई एग्जाम्पल्स आर यस एंड मशरूम। Kingdom Plantae. In this kingdom, all are multicellular and eukaryotic organisms. Number B, chlorophyll is present, so it can prepare their own food called rough. Number C, food is stored in the form of starch. Number D, cell wall is a reagent made up of cellulose. Number E, examples are all plants. Number 5 जो है kingdom Animalia. Number A point है इसका, in this kingdom all the organisms are eukaryotes and multicellular. Number B, all are heterotrophic in nature. Number C, cell wall is absent. Number D, two types of animals. अच्छा, एनिमल्स में टू टाइप वर्टिब्रेट्स हैं, इनवर्टिब्रेट्स हैं। वर्टिब्रेट्स हम ह्यूमन, इनवर्टिब्रेट्स लाइक मॉस्कीटो, हाउस फ्लाई जिसके बैकबोन नहीं होता, तो यही बोलते हैं। आर दोज हैविंग बैकबोन एग्जांपल काउ, गोट, ह्यूमन। इनवर्टिब्रेट्स आर दोज हैविंग नो बैकबोन एग्जांपल आर जेलीफिश, मॉस्कीटो, हाउस फ्लाई। ठीक है जी। राइटिंग आपकी जैसी भी हो, लेकिन हमें अभी कोर्स कंप्लीट करना है। आप अच्छी राइटिंग भी कर सकते हो, हेडिंग्स के साथ साथ जितना एक्सप्लेन कर सकते हो इतनी अच्छे मार्क्स आएंगे। लेकिन कोर्स कंप्लीट करना नहायत ज़रूरी है, और कंफ्यूज नहीं होना, अपने लिए एक नीट कॉपी बनाए। ठीक है। अच्छा, फिर है लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। मिलियंस ऑफ स्पीशीज आर प्रेजेंट ऑन दिस प्लानट अर्थ। नंबर 2 पॉइंट जो है मोस्ट सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म सच दैट बैक्टीरिया टू मोस्ट कॉम्प्लेक्स वंस ह्यूमन बीइंग हम। ठीक है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ एटम, मॉलिक्यूल, ऑर्गेनेली, सेल्स, टिश्यूज, ऑर्गन्स, ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गेनिजम्स। लेवल 1 है सब एटॉमिक पार्टिकल्स एंड एटम्स। अच्छा, ये पॉइंट्स में, ये भी पॉइंट्स में, सब कुछ पॉइंट्स में आपने लिखना है उधर। ठीक है। डायग्राम्स सीखने हैं आपने, वो 2-3 दिनों में सीखने हैं, उसके लिए प्रैक्टिस ज़रूरी है। डायग्राम्स सीखने, बायो में डायग्राम्स बहुत ज़रूरी होते हैं। All living and non-living things are composed of simple units called atoms. Number 2 जो है atoms are composed of electron, proton and neutron which are called subatomic particles. Number 3 जो है similar atoms combine together to form elements. Number 4 there are 123 elements in which elements make up living organisms. These are called as बायो एलिमेंट्स। नंबर 5 जो है ओनली 6 ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। ठीक है। ये सारे मेकअप 99% ऑफ दी प्रोटोप्लाज्म। ये देखें, ये आपकी बुक में भी होगा, ज़रा गौर फरमाएं। लेवल 2 मॉलिक्यूल एंड कंपाउंड एटम्स कंबाइन टुगेदर थ्रू बॉन्ड्स एंड फॉर्म मॉलिक्यूल एंड कंपाउंड्स। एटम और बायो एलिमेंट्स गिव राइज टू मॉलिक्यूल्स कॉल्ड बायो मॉलिक्यूल्स। बायो मॉलिक्यूल्स बायोमोलिक्यूल्स। अच्छा, बायोमोलिक्यूल्स, माइक्रोमोलिक्यूल्स एंड मैक्रोमोलिक्यूल्स। अच्छा, माइक्रोमोलिक्यूल्स मॉलिक्यूल्स which are having lower molecular weight are called macromolecules. Example are amino acids and glucose. Number macromolecules molecules having high molecular weight are called macromolecules. Example proteins and carbohydrates. Level 3 organelles, different biomolecules combine together in a specific manner and form a subcellular structures called organelles. Example mitochondria, chloroplast, ribosomes, etc. Each organelle performs a particular function. For example, mitochondria provide energy to the cell and ribosomes prepare proteins. Level 4 cells. Many organelles such as ribosome, mitochondria, etc. combine together to
to form cell है. Cell is the basic structure and functional unit of all living organisms. Number 3 जो है, in unicellular single cell give rise to a whole body, while in multicellular there are also more levels of organization. Level 5 जो है, tissues. In multicellular organisms, cells having similar structure and function to combine together to perform a specific function is called tissues. Example, in plants, mesophil tissue is made up of cells which perform photosynthesis. In animals, glandular tissue is made up of cells which produce secretion. Level 6 organs. When different tissues combine together give rise to an organ which perform a specific function. Number 1 जो है, in muscular tissues grinding of food. In a glandular tissue juice secretion to digest food. इसे आप कॉपी कर सकते हैं, पिक्चर भी ले सकते हैं, वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं. Level 7 organ systems. When different organs combine and coordinate with each other to perform a specific function called the organ system. Example are blood circulatory system. In animals, the blood circulatory system is composed of organs like heart, arteries, veins, and capillaries. Organisms, different organ system combine together to coordinate with each other and thus make a whole organism. Example, different system like respiratory system, digestive system, circulatory system, etc. in a man combine to form organisms. अच्छा, ये दूसरी बात हो रही है, सिमिलर ऑर्गेनिज्म बनते ये होते हैं, तो फिर उसके बाद पॉपुलेशन बनती है, पॉपुलेशन के बाद कम्युनिटी बनती है, कम्युनिटी के बाद इकोसिस्टम्स बनते हैं, और इसके बाद बायोस्फीयर बनते हैं. सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन. अच्छा, ऑन द बेसिस देयर आर टाइप्स ऑफ, इस नोट्स को आप पढ़ेंगे तो आपको कोर्स भी कंप्लीट हो जाएगा, आपको बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे बोर्ड में इंशाल्लाह. On the basis there are types of organisms. Number 1 unicellular, having a single cell. Number 2 multicellular, having more than one cell, many cells. Although some unicellular organisms live in a group of form which is called colonial organization. Number 1 unicellular organization, these cells consist of single cell and different activities are performed by different organelles. There is a division of labor among different organelles. Although these are unicellular, yet they perform vital activities of life. Examples are amoeba, euglena, chlamydomonas. ठीक है, ये colonial organization. Volvox is a green algae, typical example of colonial organism. It lives in a aquatic habitat, इसे habitat बोलते हैं. ठीक है, many volvox combine together and form small colony which in turn give rise to give rise to a big colonies. Most functions are performed by a cell. However, cell cannot live independently as they are dependent on each other. Examples are some specific cell colony perform reproduction while other make locomotion, which individual cell are not capable. So such type of organization is called colonial organization. Multicellular organization. In multicellular organization, cell are organized into tissues which in turn form organs, and organs make organ system. All plants and animals have multicellular organization. Example of plants, vegetative parts of root, stem, branches, and leaves, reproduction parts of flowers. अच्छा, रिप्रोडक्शन पार्ट्स इसके फ्लावर्स जो है हम सबको पता है. ठीक है ना. एनिमल्स जैसे फ्रूट्स होते हैं. ठीक है ना. तो एनिमल्स मेनी सिस्टम्स लाइक रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, प्रोडक्टिव सिस्टम, एक्सेट्रा है. जैसे एग्जांपल फ्रॉग लिए, आपका एक चैप्टर मुझे लगता है कंप्लीट हो गया है अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस. ठीक है ना, पेशावर बोर्ड के मुताबिक. चलें जी, खुदा हाफिज़.